we are also human beings. Yeah. We We're not are not robots. machines. Ah, We're right. not machines. We have our own set of highs and lows. We can fall ill. सबसे बड़े लेवल का जो झूठ बोलना है वो हम ऑफिस में ही सीखते हैं. Why? Because हमें पता है कि Hello everyone, this is me, Jyotika Bedi, your host, psychologist, and the founder of Happiness is Love. Today I have someone very, very gifted and talented, Devangana. She is an international award-winning RJ, actor, and someone I absolutely love. And what I admire the most about her is her ability to stand up for the right and speak her mind unapologetically. So thank you, Devangana, for being a change maker and a firecracker. Thank you so much for such a fabulous introduction. And जब आपने introduction दिया, I was like, really? अच्छा हाँ, कह तो सही रहे हैं ये लोग सारी की सारी चीजें. But yeah, I feel so honored, and it's a complete privilege for me to be part of this happiness circle and share all my mental health and wealth and well-being. आज जिनके बारे में हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं. I think for the first ever time मैं ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन पब्लिकली करने वाली हूँ. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट. सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर. Love you, because many of us really struggle in our work situations. And Devangana, आपकी आवाज तो बहुत ही बुलंद है और आप जो बोलते हो दिल से बोलते हो, because बहुत जरूरी है for us to have such conversations so that anybody who's seeing you or listening to you can get that confidence and courage कि अगर Devangana कर सकती है तो even I can do it. And that's why today this is about just us talking about spending time together to understand more about how we can, as companies, as organizations, create more awareness so that people feel happy, people feel energetic when they go to work, and we all have the time where we can support each other, we can help each other, work related, work politics, deadlines, travel, itna kuch hota hai kaam mein, right? It is very important to protect our peace of mind. It is very important to protect our emotional, our social, our mental health. And I believe that in the workplace, everyone needs to thrive. Everybody should wake up feeling energized. And that's why today my first question to you is, please tell me why this topic is so important for you. Mental health at the workplace. इसके बारे में आपका क्या, या इसके लिए आपके लिए क्या थॉट्स हैं, प्लीज शेयर करें. सी ज्योतिका, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऑफिस के मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग के बारे में यहाँ पर बात करते हैं. बिकॉज कहीं ना कहीं हम जब जिस चीज में जो काम कर रहे होते हैं वो अंडर प्रेशर कर रहे होते हैं. या तो हमें कोई फाइनेंशियल प्रेशर होता है, या फिर हमें प्रेशर होता है कि आई हैव टू गो बैक एंड सर्व माई फैमिली. सो मैं कैसा भी ऑफिस में कुछ भी चल रहा हो, आई हैव टू डील विद इट एंड आई हैव टू slog around it. So वो सारी की सारी चीजें करनी है. So I feel कि over the period of time I've given my radio industry, my entertainment industry quite 15 years of time. And this 15 years of time I feel कि I have faced a lot. Yeah. In terms of my mental health, in terms of my physical health, in terms of my financial health. तो सारी की सारी चीजें मैंने बहुत सारी चीजें शेयर करना चाहती हूँ आज. So that's why it is very very important for me to talk about it and to tell people, because people always have seen the brighter side of Devangana. Because that's my profile and that's how I am. I'm a very happy, chirpy, merry sort of person. But I have my own set of highs and lows. मैंने अपनी लाइफ में अपना एक खुद का एक पर्सनल इमोशनल स्ट्रगल रहा है सारी चीजों के लिए. सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जब अपने ऑफिस में इतना सारा टाइम स्पेंड करते हैं तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहे, एक हैप्पी एनवायरनमेंट में रहे. सो दैट इज व्हाई it is very very important for me to talk about it, because I know कि कहीं ना कहीं बहुत difficult होता है एक decision लेना to leave your job, to leave your company, I should be saying, and move on in life for your, just for the sake of mental peace. So yeah, it is very 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 important. Yes, and आपके experience में what according to you is the most vital parameter that employers need to keep in mind to ensure the mental and emotional well-being at the workplace? Employers को क्या सोचना चाहिए, because कोई सोच नहीं रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा.
एग्जैक्टली कोई सोच नहीं रहा है। सबसे पहले तो एक एक बहुत छोटी सी चीज है दैट उनको ये पता होना चाहिए दैट वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, Yeah, we're वी not आर नॉट robots. मशीन। Ah, We're right. not machines. We Yeah. have our own set of highs and lows. We can fall ill. We Hmm. can also have family tragedies. We can also have mood swings in life. तो सबसे पहले तो एम्प्लॉयर्स को मुझे ऐसा लगता है कोई भी कंपनी एक इमोशनल और मेंटल वेलबींग के लिए एम्प्लॉयज को ये चीज जरूर जरूर देखनी चाहिए, ये चीज जरूर रखनी चाहिए कि यार कोई नहीं, अगर उसके घर में दिक्कत है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, सो वी शुड कम अप एंड सपोर्ट फॉर इट। Yes. ओके, हमने जनरली देखा है कि जब जब मुझे ध्यान है बचपन में ना, मेरी मम्मा हमेशा बोलती थी कभी झूठ मत बोलना, झूठ बोल के कहीं मत जाना, कि कहीं भी जाना हो तुम घर पे सच बताओ, हम तुम्हें अलाउ करेंगे, वी विल सपोर्ट यू इन दैट। लेकिन जो सबसे बड़े लेवल का जो झूठ बोलना है वो हम ऑफिस में ही सीखते हैं। व्हाई? बिकॉज हमें पता है कि हमें हमारे सच बोलने पर छुट्टी नहीं मिलेगी। Our bosses will not approve if I say, okay, I am not, feeling great. मैंने बहुत काम कर लिया है. I just need a छुट्टी for a week. He's like, why? Yeah. Why do you need a छुट्टी for a week, right? Yeah. So they will come up with something or the other, or maybe they'll come up with, no, you cannot take a छुट्टी. Oh, how can you take a छुट्टी? You have to do this work, you have to do that work. बहुत कम bosses ऐसे होते हैं, बहुत कम companies ऐसी होती हैं जो बोलती हैं कि नहीं यार तुम जाओ, I know तुम जाकर वापस आओगे तो बहुत अच्छा काम करोगे। Okay, so the employers need to give the employees that set of space कि वो सच बोल के सारी चीजें करें। And also एक और चीज होती है कि जब हम लोग सच बोलते हैं, या even if we talk about that there's something which we are facing in office, probably because of some person, probably because of some situation, so they will जो मेरा पर्सनल जो इतने टाइम में सारी चीजें रही हैं, if we talk about the particular HRs of the company, the HRs will always have a very very, what should we say, a very diplomatic answer, very diplomatic or probably biased at time, where you feel that yaar, I am telling him the truth, dude, this is what I'm facing, you need to understand, you need to listen to both the sides, you need to see the both sides of the coin, that this is, agar aisa hua hai to aisa bhi ho sakta hai, right? So I feel that employers are lacking in that manner. एक communication gap है वो बहुत बड़ा है, because हम कहीं ना बहुत डर के अंदर रह जाते हैं कि अरे यार हम अपने बॉस को ये चीज बताएंगे तो उनका एक परसेप्शन बन जाएगा, अरे देवांगना तो यार हमेशा लड़ाई करती रहती है, अरे ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय तो इसके साथ तो हमेशा प्रॉब्लम्स रहती हैं। नो, so we want to tell our own things without being judged. We want to tell it to everybody, and especially office mein, of course we want to work in a very happy environment. So that's what I feel that the employers should take care of this. 100%. If the employees will be happy, definitely they'll be more creative, they'll be more productive. Everything will be it'll be a win-win for everyone. In fact, मेरी तो एक ही prayer है, एक ही दुआ है कि एक ऐसा दिन आए कि लोग फोन करके अपने बॉस को कह सकें कि आई एम फीलिंग मेंटली एग्जॉस्टेड, आई एम फीलिंग फटीग मेंटली। हम बीमारी की फिजिकल इलनेस के लिए तो हमें कंपैशन मिल जाता है कि चलो ठीक है, बीमार हो गए, बुखार आ गए, वायरल आ गए, लेकिन व्हाट अबाउट द फैक्ट आई एम ह्यूमन, आई एम नॉट फीलिंग अपबीट टुडे, आई एम नॉट माय 100% टुडे, एंड टू हैव compassion in the employers that yeah, you can be, it's okay not to be okay, and I'm here for you and I support you. Exactly, and this is the same thing that happened with me with my previous company, where I was telling everybody, everyone was like, when they say see social media, it's all like happy, it's all merry, it's like, oh my god, Devangana is having a ball of time in her life, but this is not the reality. I'm not well, I was not feeling great about it. Every morning I used to wake up and I was like, why the hell am I doing it? There's so much of, toxicity around me. There's so much of a negativity. I need to get out of it. Yeah. So I feel that it takes courage to tell to people. In fact, my previous company also, we know that we were in a situation where I was, having a consultation with you, and you were like, Devangana, you should do it in this manner. And that is where I got a courage कि नहीं यार, mental health important है, बहुत important है, and especially when we talk about the entertainment industry. 4-5 days back, we lost somebody, and that particular person I worked with, he committed suicide. Oh my god. He was a very fabulous choreographer. He was really great at his work. When you look at his social media, it was like he was doing so many events around, and he was like, we were like, oh wow, this person is doing so great, but ultimately jab pata chala he was not mentally well, he was dealing with a lot of financial crisis, he was not able to talk it to anyone out there.
How And that sad. was, the Yeah. reason. So I felt that this is very important. This is the high time where Yes. everyone should talk about it, everyone should take care of it. It's not just about कि ठीक है आपने physically अपनी चीजें ठीक कर ली, आप gym चले गए, आपने ये कर लिया, आपने हाँ. वो कर लिया. It's all here in the head. Okay, Yes. you need to feel great from within, not just okay. आज तो मैं बहुत अच्छा feel कर रही हूँ. No, I need to feel it from within. Yes. So it's Yes. very, very important, right? And Devangana, thank you for being so honest कि yes हम लोग ना मास्क पहनना बहुत आसान है. My life is so vibrant, social media पे अच्छे post लगाना, all that is easy. But am I truly internally at peace with myself and the world Exactly. around me? And वो support बहुत अच्छा आपने कहा कि workplace में हम सबसे ज़्यादा time तो हम अपने family में काम करते हैं, workplace में ज़्यादा तो वो support ताकि कोई किसी की बात सुने, एक सेकंड ले तो किसी को पूछे कि दिवांगना are you okay today? You don't look too okay today. चाहे दिवांगना smile कर रही है, but just to ask the other person that you don't seem your normal self. Is there something wrong? Something can I do for you to make you feel better? ये छोटी छोटी चीजें हैं for people to feel supported. कोई बड़ी चीज नहीं करने की जरूरत हमको. Just the little things, which are the big things. Exactly. तो आप बताएं आपके क्या suggestions हैं? What are some tools or tips that maybe you can suggest that can help people stay more emotionally and mentally strong at the workplace? At a workplace, जब भी हम लोग जाते हैं तो I feel that this is more like a big boss का घर. Okay, जहाँ पर हर एक इंसान अपना अलग गेम खेल रहा है. We have to get out of it because I feel that teamwork makes the best work. Yes. आप अकेली सारी चीजें नहीं कर सकते हो. You need to support the other colleagues as well. Yes. Okay, when you're doing on something, when you're working on something, when you're working on a project, it is not just your project and you're not just doing it for yourself. Okay, you're doing it for everybody's well-being. Correct. Doing it for the company as well. तो वो अपने साथ साथ बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोगों को आप साथ लेकर चलते हैं. And I always believe in the term which is called as growing and glowing together. अगर आप साथ में सब लोग मिलके ग्रो करोगे तो साथ में सब लोग मिलके ग्लो भी करोगे. Which I feel कि ऑफिसेज में ना ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मिस हो जाती है. लोग हर कोई अपना अलग गेम खेल रहा है. ऑफिशियल पॉलिटिक्स रहेगी, आपके सामने लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मीठे होंगे और आपके पीठ पीछे दिल भी लाइक ओह तुम्हें पता है कि ऐसे ऐसे चल रहा है. नो, जस्ट गेट आउट ऑफ इट. Just get out of it. And ये जो वो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है. Because कहीं ना कहीं I feel that whenever I meet my friends, whenever I meet the other creative minds, I always discuss ideas. I never discuss people. I always discuss the creativity. I always discuss कि हम आगे क्या चीज कर सकते हैं यार. Let's do something like this. Let's do something like that. So I don't discuss people. So जहाँ पर हम लोगों ने एक लोगों को डिस्कस करना बंद कर दिया. The day we stop discussing people for bad, okay, in terms of negativity, in terms of politics, I feel आधी problem तो वहीं खत्म हो जाएगी. Correct. Very good point. That is one thing. Secondly, आप जैसा मैंने अभी पहले भी थोड़े टाइम पहले कहा था कि ऑफिस में आप अपने जो दिन के 24 आवर्स में से ऑलमोस्ट 9 to 10 आवर्स, probably 12 आवर्स आप मान लो, बिकॉज कम्यूट भी करते हो आप, सारी चीजें करते हो. आप इतना बड़ा पोर्शन अपने दिन का अपने ऑफिस को दे रहे हो. So the environment, the atmosphere needs to be really amazing and fantastic. Like all my offices wherever I worked, India, abroad, जहाँ पर भी मैंने काम किया, I made sure कि हम लोग बहुत अच्छे से मजे करें. Okay, हम एक और चीज होती है that you need to break the monotony. Yes. Because I understand I am in the entertainment field. ठीक है, मैं अपने आप को entertain रखती हूँ, अपने ऑफिस में डांस करती हूँ, गाती हूँ, सारी चीजें करती हूँ. But when it comes to corporate, you cannot actually dance. Okay, you cannot keep on, doing all those things. But then at that point of time, it's very, very important for you to break the monotony. Yes. Whatever you are doing, just take those little breaks. Yeah. I feel that these little breaks will help you a lot. Yes. Do something which is, which you love to do. Yes. Maybe you can get those board games in office. Yes. Maybe you can have those fun and fadu Fridays every week or probably every second Friday, so that कहीं ना कहीं एक ऑफिस का एनवायरनमेंट अच्छा हो. Go for outings with your office colleagues. हम लोग कई बार ऐसा सोचते हैं ना, अरे यार ऑफिस के लोगों को ना ऑफिस की बात नहीं देखना है हमें. No, you should get out of it. You should spend time in a very, very happy manner. क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता. हर एक इंसान के अपने अंदर खुद के फ्लॉज होते हैं, except the way that they are.
Yes. You be good to people, the people will be good to you. Yes. इतने सारे लोगों के साथ काम करने के बाद मुझे ये चीज रियलाइज हुई है that you cannot change people, okay? And you should also not get changed for the people in that manner. जैसे आप हो, जैसे वो हैं, have the power to accept them. तो कहीं ना कहीं जब आपने उनको देख लिया ना, आपको एक बार लगेगा अरे यार ठीक है यार, ये तो ऐसा ही है, ये तो करेगा ही करेगा. So you will be at peace. True. You will actually be at peace. And also communicate. बात करना आपस में बहुत बहुत important है. Talk about work, talk about your family, talk about your highs and lows, because वही आपके ऑफिस में वही लोग हैं जिनका चेहरा आपको रोज सुबह उठ के देखना है. You cannot afford to make peace. You cannot afford to make fight with everybody. Yes. I have tried a lot to make peace with people, but कई बार ऐसा भी होता है कि यार नहीं है तो है ही नहीं. उस पॉइंट पर आपने उस चीज को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया. एंड या आई फील दीज आर वेरी लिटिल थिंग्स जो आप कहीं ना कहीं ऑफिस एनवायरनमेंट को अच्छा बना सकते हो. मेक योर ऑफिस वाइब्रेंट. एंड एक छोटी चीज और मैं करती थी अपने आप को पर्सनल लेवल पर मोटिवेट करने के लिए. जो भी जैसे मुझे कोई भी अवार्ड मिला, जैसे मेरा कोई भी एक अच्छी सी चीज हुई, तो मैं उसका एक छोटा सा एक फोटोग्राफ उसको अपने डेस्क पे लगा लेती थी. सो दैट आई वो मुझे दिखता रहता था कि अच्छा यार मैंने अभी ये किया है. या कभी भी मुझे थोड़ा सा लो फील होता था तो मैं देखती थी अरे भाई ये सब किया है ना मैंने, टेंशन क्या है, विल डू मोर. So yes, that's what I used to do. How wonderful. And like they say, fun is the most productive part of our lives. Exactly. It's so important in the work world. People have become so stoic and cold, and they think being professional means कि आप fun ना करो, पूरे टाइम serious ही रहो. उल्टा है. अगर आप fun करोगे, if you laugh, you'll enjoy. You and your team will definitely be at their best. डेफिनेटली यार. और यही चीज मैंने की है. पीपल वर लाइक दिवांगना तुम सुबह 6 बजे ऑफिस स्टूडियो कैसे पहुंच जाती हो, रात के 2:30-3 बजे तक तुमने पार्टी करी, एंड हाउ आर यू सो एक्टिव देयर, यू नॉट स्लीपी एंड ऑल. आई वाज लाइक बिकॉज आई एंजॉय व्हाट आई एम डूइंग. आई एंजॉय माय वर्क, आई एंजॉय इंटरेक्टिंग विद पीपल, आई एंजॉय कमिंग टू द स्टूडियो, टॉकिंग टू पीपल, मेकिंग एवरीबॉडीज मॉर्निंग लाउड. सो आई टोटली लव माय वर्क. So that's the main reason I was able to do it. और मैं लोगों से ये बोलती हूँ कि यार जब आपको ऐसी फीलिंग आने लगे ना कि सुबह उठ के यार क्यों कर रहे हो आप ये चीज, तो प्लीज छोड़ दो. That's need to change. Yeah, yes. Exactly. That's where I took the decision of leaving my company. Not my job. I just thought of that I'll do something else, and I am totally loving this one. I'm just loving this phase because वो एक phase मेरे साथ ऐसा आ गया था कि मुझे सुबह उठ के ऐसा लग रहा था कि no यार, I cannot deal with the negativity around me, the negativity there in the studio. So I need to move on for my mental health, for making myself happy. इतने साल मैंने 15 साल लोगों को खुश किया है, but now this is the time कि मैं खुद को भी खुश करूं. Yes. Right. And because अगर मैं ही खुश नहीं रहूंगी तो I don't think so ये जितना जो भी कुछ हो रहा है उसका कोई फायदा है. So yeah. और मुझे आपका एटीट्यूड इतना अच्छा लगता है. आपने कहा कि मैंने जितने भी साल बिताए हैं अपनी कंपनी में, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल, बट नाउ इट्स टाइम टू मूव अप बिकॉज नाउ एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप आई डोंट फील सो अपबीट. सो इट्स टाइम फॉर मी टू डू बिगर बेटर थिंग्स. आई हैव टू गेट आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन so that I can embrace the new chapter of my life. Exactly. But it was not a very easy decision for me. Yes. Because जब सुबह आप उठते हो तो आपका एक टाइम टेबल बन जाता है कि okay, I have to 6 o'clock I have to be there in the studio. I have to make people laugh. I have to entertain them. Yes. It is not an easy thing. And also when it comes to the job thing, people are very much secure and in their own comfort zone कि चलो ठीक है काम करो या ना करो, सैलरी तो आ ही रही है आपकी. Correct. आप अच्छा काम करो, आप खराब काम करो, आपको सैलरी तो मिल ही रही है. People have this attitude, but मुझे ऐसा लगने लगा था कि नहीं यार, मुझे I have to get out of my comfort zone. I have to start afresh. I have to work on myself because मैं अगर खुश फील नहीं कर रही हूँ तो मैं अपने जॉब के साथ वो कहता है ना नाइंसाफी कर रही हूँ, गद्दी से गद्दारी कर रही हूँ. That's what we say always. So, but yeah, I'm all set to start afresh. And बहुत सारे लोग ना आज के डेट में भी लोग इस चीज से डील कर रहे होंगे that it's a very important and very difficult decision for them to leave their job. Yes. Okay. Despite of all the odds they're facing, despite of every morning they're getting up and saying कि यार भाई वही ऑफिस जाना पड़ेगा, उन्हीं लोगों का मुंह देखना पड़ेगा, वापस आके भी they will come up and cry कि my boss is like this, my boss is like that. It's very very difficult. But I feel कि अगर आप उस चीज में अच्छा फील नहीं कर रहे हो ना, just try to work on the backup plan.
ट्राई टू वर्क अपॉन कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कैसे कर सकते हो, बिकॉज आप ये जितना जल्दी कर लोगे वो आपके लिए और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा. Yes, very true. And you're right. It is hard, but yes, it's doable. It's not It easy. is. It's not easy, but yes, we can do it. And get the support. Get that one person who can tell you that yes, you can do it, because we all need support. We all need that one person who tells us that yes, I'm in your corner, you got this. And that takes me to our next question, that how can we, छोटे ways में, how can we help a colleague who may be going through a tough time at work, who may be going through some emotional issue? हम अपना पार्ट कैसे प्ले कर सकते हैं? What can we do at the workplace? Exactly. You know क्या होता है कि workplace, for me, my workplace was my family. Okay, I had all my bros, I had all my buntais, I had my boss who was really fabulous. So मैं उनके साथ communicate. जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम ना कहीं आपस में बात नहीं करते हैं. आपस में अरे नहीं यार, मेरे साथ ऐसा हो गया, अगर मैंने उसको बताया तो वो क्या सोचेगा या वो क्या सोचेगी. The fear of being judged. I feel you should talk about it. For me in my office, like for example, I give you an example of my boss. I used to go and speak to him that sir, मुझे ये चीज अच्छी नहीं लग रही है, I'm not able to do it, मुझे समझ नहीं आ रहा है. He was like, Devangana, take a break. Take a break in the sense, it's okay. Just not every show can be really fabulous, okay? क्योंकि हम लोग अगर being an RJ, हमारे पूरा 7 days अगर हम लोग काम करते हैं, पूरे 6 days हम लोग काम करते हैं, so अपना हर एक शो बहुत fabulous हो important नहीं है. एंड लोगों के लिए भी अपना हर एक काम, हर एक प्रोजेक्ट जो आप करो, important नहीं है कि वो अलग तरीके से बहुत ही अच्छा हो जाए. It's not necessary. हो सकता है कभी-कभी चीजें खराब भी हो जाएं, हो सकता है कभी-कभी चीजें एवरेज हो सकता है कभी आपने बहुत अमेजिंग चीज कर दी है. So उस अमेजिंग वाली चीज को सेलिब्रेट करो अपनी टीम के साथ. जैसे हम छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करते थे, we used to have those little cake cutting ceremony. जैसे मुझे अवार्ड मिला था तो my team was there with a cake, with a whole celebration, with a band book. हम लोग छोटे छोटे टीम लंच पे जाया करते थे. तो ये सारी चीजें तो टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज रहती थी. बट इन टर्म्स ऑफ एन इंडिविजुअल, you should have that one person. It can be anyone in office, जिससे आप अपनी सारी चीजें डिस्कस कर सको. बिकॉज कहीं ना कहीं उसको पता होगा कि आप की लाइफ में इस टाइम पर क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में आप इस टाइम पर टेंशन में क्यों हो. तो अगर मैं सपोज ऐसा सर पकड़ के बैठी भी हूँ एंड द पर्सन, माय प्रोड्यूसर नोज कि ओके व्हाट इज गोइंग अराउंड विद हिम, तो ही विल बी लाइक कि अरे कोई नहीं यार दिवांगना, चल तू चिल कर, आई जस्ट टेक केयर ऑफ द अदर थिंग्स, आई जस्ट सपोर्ट यू, आई विल जस्ट डू योर बैकअप, आई विल जस्ट डू दिस जॉब दैट आई एम एबल टू डू. सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा. एक आप अगर आप किसी की जॉब पे, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज में, बट सामने वाले के लिए एक बहुत बड़ा इमोशनल सपोर्ट हो जाएगा. सो ये जो इमोशंस का बैगेज लेके हम चलते हैं ना, कि ऑफिस में सबके सामने एक मास्क लगा लिया, डूड आई एम द कूलेस्ट वन, डूड आई एम द हैप्पीएस्ट वन, जस्ट बी अनफिल्टर्ड. At least with few, find that one person. And मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी मतलब जैसे हमारे ऑफिस में भी अगर किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम रहती थी, तो एक छोटा सा फोन कॉल भी मुझे लगता है कि उसको बहुत सपोर्ट करता था. और एक छोटा सा मैसेज भी, यार आई एम देयर, नो वरीज, अपन कर लेंगे यार, तुम टेंशन मत लो, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. एग्जैक्टली. सो लोग ना कहीं यहीं पर चीजें मिस कर जाते हैं. सो एज एन इंडिविजुअल आई फील जस्ट टॉक इट आउट. बात करने में किसी से कभी चीजें खराब नहीं होती. आपकी लड़ाई भी है ना, तो मुझे तो ध्यान भी नहीं रहता, कोई मुझसे अगर 6 महीने बाद आके मिलता है कोई बंदा, अरे यार दिवांगना वेरी सॉरी, आई टेंड टू फॉरगेट, भाई इसके साथ क्या हुआ था, मेरी लड़ाई क्यों हुई थी. बिकॉज मैं नेगेटिविटी का बैगेज लेने से बेटर है मैं पॉजिटिव चीजें याद रखूं उस इंसान के लिए. सो जस्ट डू दीस लिटिल थिंग्स, आई फील दैट विल मेक समवन रियली फील गुड. Yes, and we can play our part, absolutely. और यही हमारा मुद्दा है, happiness is love, जहाँ हम रिश्तों को और मजबूत बनाते हैं, बंधनों को और बढ़ाते हैं. हमारा एक विजन है कि फ्यूचर ऑफ वर्क ऐसा होना चाहिए where every employee feels heard, feels understood, does not feel judged. इसके बारे में आपका क्या व्यू है कि again like I'm asking you कि this is our prayer, this is our hope कि future of work ऐसा हो. Do you also envision the same future? Because it starts with you and me dreaming together. Exactly, absolutely. So I would like to tell this to everybody who's watching it out there. I was going through a very, very rough phase of my life where everything was fine, everything was really fine, and it was fabulous. I was winning awards, I was being loved by people. But then
internally I just felt that there's something which is not right. Okay, I feel मैं ऑफिस से निकलती हूँ पूरा डांस करके धमाका करके, मैं कार ड्राइव करते करते आई यूज्ड टू हैव टीयर्स इन माय आईज, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन. मैं रात में उठ के मुझे एकदम से कोई सैड अटैक आता था एंड आई यूज्ड टू जस्ट सिट बैक एंड क्राई. आई वाज लाइक व्हाट इज रॉन्ग, सब कुछ तो ठीक है दिमाग में, क्या वॉइड है लाइफ में, क्या चीज ऐसी है जो मुझे अच्छी नहीं लग रही है. ओके, so that is where I met this beautiful lady who's sitting right in front of me. I was, talking to her, and one fine day, I just told her about everything, the baggage, of course, the emotional baggage that I was carrying. मुझे पता भी नहीं था कि ये चीज खराब है. I was like, अच्छा, मुझे लगा मैंने उस चीज को छोड़ दिया है, वो तो पास की बात है, I've left that. But I didn't realize कि उसने मेरे अंदर इतना वैक्यूम क्रिएट कर दिया था कहीं ना कहीं, that ये जो मेरा क्राइम वाला जोन था, जो मेरा डिप्रेस्ड वाला जोन था, जो किसी को नहीं पता था, जो किसी को भी नहीं पता था, वो इस चीज की वजह से है. सो इट्स ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट वन पर्टिकुलर पर्सन. इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू टेक अ कंसल्टेशन विद समबडी हु इज अ प्रोफेशनल. ओके, हु इज अ प्रोफेशनल हु नोज कि कहाँ किधर कैसे क्या दिक्कत है. क्योंकि हम लोग को अगर डर लगता है ना कि हम अपने दोस्तों से इस चीज के बारे में बात करेंगे, सो दे माइट जज अस. सो दैट इज वेयर द प्रोफेशनल, द पर्सन हु इज टेकिंग केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, आई थिंक you should go ahead with this. So aaj I feel it's not even a month, and I feel really happy. I feel empowered. I feel कि ठीक है, मैं निकल चुकी हूँ अपनी लाइफ की एक नई जंग पे. Every morning, this lady used to, send me a voice message. Devangana, are you feeling upbeat? Devangana, are you feeling good? Did you smile? And I used to feel great about it. I was like, okay, there is someone who's there to support me. There is someone who's available to talk to me 24/7, despite of any odd that is happening with me. So every time I used to tell her that I'm not feeling great, I feel like crying. My office people came to my place. I had this farewell and so many things. I think पिछले एक महीने में इतने सारे emotional roller coaster रही है मेरी life. But I am so glad and happy to have you in my life, and I'm so happy कि आज हम सब लोगों के साथ ये discuss कर रहे हैं. So yeah, a big thanks and gratitude, क्योंकि आप मेरी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हो. एंड बिकॉज ऑफ यू आई वाज एबल टू टेक दिस स्टेप ऑफ कि क्या करना है लाइफ में. आई एम अ वॉरियर एंड आई विल बी एबल टू डू इट. Yes, so a big thanks to you. And now you are going to be that light for so many, because I know जो हमें देख रहा है, जो हमें सुन रहा है, उसको लग रहा है कि oh my God, look at Devangana, she's such a firecracker. Like literally, I look at you and I see the light. I know that you were engineered for great things. Because वो आपके अंदर है. I see the goodness in you. I see the love in you. And just seeing you happy, that's my reward. Like I really feel that, okay, this is it. We've done it together. And thank you so much. I will give you more and more of rewards now. I will give you more and more of rewards. Waiting for you. Because yes. But trust me, I feel कि आपके suggestions ने मुझे बहुत help किया. The things that you were telling me that Devangana, you should do it in this manner. Devangana, you should pen it down. Devangana, you should watch this video. Devangana, you should do this. So I feel बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी हेल्प है ये. एक बहुत बड़ा एक इमोशनल सपोर्ट है ये, और ये हर किसी को अपनी लाइफ में लेना चाहिए. बिकॉज बाहर से सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, बट इंटरनली जब तक चीजें नहीं होंगी ना अच्छी, यू विल नॉट बी एबल टू लिव योर लाइफ. आप सिर्फ एक फेक फिल्टर के साथ, एक इंस्टाग्राम के फिल्टर के साथ आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करते जाओगे. सो आई फील कि पीछे की जो चीजें हैं उनको क्लियर करना, इंटरनली अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना, इमोशनली हैप्पी होना, it's very important. Yes. So that's why people were like, बहुत सारे लोगों ने जो देखा, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला, oh Devangana, why have you done this? Why have you left your job? Why have you left your company? You were doing so fabulous. जिस दिन मेरा last day था, उस दिन भी तुम्हारे शो को अवार्ड मिला है. Why are you doing this? I was like, because I'm not happy. I'm not happy. I don't feel happy. I don't feel empowered. I want to do something else in life. I want to get back to my roots, in the sense of where I was emotionally. And onwards and upwards चलना है मुझे लाइफ में. So I just don't want to get stuck somewhere. Yeah. तो बहुत एकदम ऐसे stuck वाली फीलिंग थी. वो एकदम से ऐसा लगा कि एक कॉर्ड कटी है और I'm free. Yeah. That is what has happened with me, and all thanks to you.
Not at all. You did the hard work. You walked the path, and now you are setting a roaring example for so many women, not just women, even men, who will be like, oh my God, I'm feeling stuck. I'm not happy. I need to ask myself certain questions. Am I carrying any baggage? Do I need to heal myself? And yes, help is available. Help is just a step away, but you have to take that step. दिवांगना, आपने efforts करे, आपने step लिया, आपने वो hard work करा, आपने trust किया process को, and this is what I want to tell the audience, that yes, you can do it, and together we are stronger, together we are better. You are not alone. लोगों को लगता है they are alone, and that's the biggest pain point today. बिकॉज मैं अपनी पेन किसी के साथ शेयर करती हूँ तो मुझे डर लगता है कि वो कोई वो मिसयूज ना कर ले, वो पेन उसका मजाक ना बना दिया जाए. सो पीपल आर स्कैर्ड टू इवन शेयर. बट यस, प्रोफेशनल हेल्प इज अवेलेबल. देयर इज नो स्टिग्मा टू सीकिंग हेल्प, and that's why corporates also need to do the good work of taking care of their employees' mental well-being. बहुत कुछ हो सकता है. एक सपोर्टिव वर्क कल्चर क्रिएट हो सकता है. मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज इतनी हैं. हम वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बात करना शुरू करें, बिकॉज ये बहुत जरूरी है. पीपल आर स्पेंडिंग टाइम एंड not spending time at all at home. Exactly. Also, I want to tell it to everybody, no company will give you Oscar. Okay, for doing, for your overtime, for leaving your family's birthday parties or probably marriages. Do it, take chuttis, go for all these things. This is very, very important, because I know I've worked in such, I remember I had a fever 103. Okay, I was suffering from typhoid. I was like, नहीं, मैं ऑफिस जाऊंगी और मैं जाके शो करूंगी and I might come back and I'll just sleep. And मुझे लगता है कि अगर उस पॉइंट पर I fainted in the studio. Okay, I actually fainted in the studio. I was like, no, dude, you cannot just play around with your thing. Also, one of the companies I remember I was working with, I got a stiff back. Okay, मैं गर्दन भी ऐसे नहीं कर पा रही थी. And I told my boss, my physiotherapist has asked me to be on for bed rest for almost 10 days. So he was like, no, Devangana, you cannot take a chutti. I was like, yeah, I'll suggest you another doctor, okay? My brother is a doctor. I'll suggest you another doctor. You just go and see him, but I cannot give you a chutti. I was like, no, what are you saying? What are you talking? I literally left that job. I literally left that company. Good for you. But I was lucky enough to get the offer from the other company instantly. So what is with you? So please, I want to tell it to everybody that no company is giving you Oscar for all your overtimes, for leaving your ghar ka kaam, leaving your family functions and everything. Yes, please don't compromise, because मैंने ये चीज बहुत compromise करी है. मैंने अपनी family को, अपने friends को time नहीं दिया था, because everybody knew, उन्होंने मुझ तो उम्मीदें छोड़ दी हैं सारी चीजों की. They were like, नहीं यार, दिवांगना तो बहुत ही busy रहती है सारी चीजें. But now I'm so happy that past few days I've been spending time with my friends and family all together. So please don't do that. Don't do that. And that too just because of office, you're not supposed to do it, please. Exactly, because अपने death bed पे कोई regret नहीं करता कि हाय, I wish मैंने ज़्यादा time spend करा होता office में. There are so many people who died working in office. Who died because of COVID. They were forced to come to office and bichare, and the company doesn't give you, the company doesn't even pay you, your family, that okay, I'm sorry, we are sorry that this thing has happened. No, nothing happens, please. Absolutely. So please choose the company wisely. Please choose the right environment for you, a company that truly cares about your well-being, because that is everything. Your mental health, your emotional well-being is everything. Your health begins from your head. So let's focus on that. Yes, you should. Also, I would request everyone, because क्या होता है कि जब हमारे पास offer letter आता है ना, हम बड़े excited हो जाते हैं. We are like, oh my God, we're going to be stepping in a new office, a new environment. But I have literally said no to few of them. Because I know that the environment is not great there. The people, those who leave the job, they've been talking about it. Oh my God, वहाँ तो ऐसा वैसा ये वो. अगर इतना negativity कहीं पर चल रहा है, तो I don't think so. You should think twice before joining that company. Because ऐसा नहीं होता ना एकदम से क्या बोलते हैं वो खाई से एक और, मतलब आप खजूर से नीचे लटके और एक और खाई में गिरे हो जाता है. You shouldn't be doing that. Okay, एक जगह, एक खराब जगह से दूसरी खराब जगह नहीं. You cannot afford that. Dude, you're going for your growth, okay? You're going for your own happiness. Please make sure whenever you
any organization, whenever you're joining any organization, make sure that you should see all these things as well. How the company treats the employees. Yes. Okay. Very It is important. very, because अगर आपको एकदम वो कहता है ना, अरे भाई इतना काम करा दिया, इतना काम करा दिया, काम करना खराब नहीं है, you're there to work only, right? हाँ. But then extreme काम कराना is also not that great. And at what वही cost? work At the balance. cost, yeah, at the cost of what? Not having peace of mind or good health or relationship. At what cost? कि काम at what cost? And इतना valid point आपने बोला देवांगना कि अपना ref check करें, लोगों से पूछें before you choose, because you have the right. Please choose wisely. Exactly. बहुत ज्यादा excited होकर गलत environment में चले जाओगे फिर, because again another 3 years will be very very weird in your life, very very bad emotionally, mentally, financially, whatever it is. Please make sure you choose wisely. Yes, and please, before we end, last few words from Devangana for our audience. आप क्या कहना चाहेंगी? Because I love the way you speak. I can talk to you for hours. जब पहली बारी मैंने आपको रेडियो पे सुना था, I was like, oh, I love the way you speak. I love the vibrancy in the voice and the authenticity. You come across as a very authentic person, and that's your currency. So please tell me, Devangana, what are your last few words for our audience? As you said, being a radio jockey, I can go on. पूरी रात मैं भी यहाँ पर बात कर सकती हूँ, पूरी रात मैं भी बहुत सारी चीजें बता सकती हूँ. But then, there's something that I really want to share with all of you, that if you're not mentally well, please don't think that you'll be judged. Because I was going through a very rough phase. I was really not mentally fine. और ये सारी चीजें मेरे साथ भी हुई हैं. हमारी, and in fact, if you talk about my personality, nobody can ever think कि अरे देवांगना तो बड़ी strong है यार. इसके साथ तो मतलब क्या यार, एक तो डांस कर रही थी यार, ये इतने टेंशन में कैसे, इतने डिप्रेशन में कैसे? No, it happens, and it can happen to anyone. Anyone who is the richest, anyone who has everything, anyone who's privileged, anything who's blessed with everything in life, it can happen with anyone. So I really want you should take a consultation, a professional consultation for your mental being, so that because जब यहाँ से सब कुछ सही हो जाएगा ना, तो सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी. I know the strongest of people give up their life. The strongest of people, they give upon the situations. Yes. Okay, so अपन लोग लाइफ में आए हैं. We are here to have a healthy fight. Okay, and healthy fight हमारे दिल और दिमाग के बीच की fight है. दिमाग कहता है ये करना है, दिल कहता है ये करना है. दोनों का बस एक combination जब आपको लाइफ में पता चल गया ना कि आपको करना क्या है, you will be able to have a great life. Please don't hesitate in telling that you are not fine. Don't hesitate in telling it to people that there's something which is not right with you mentally. Okay, because the times are gone. The times are gone and people used to judge you for, अरे यार इसका तो मतलब क्या, ये क्या बोल रहा है, ये mental psychiatrist, ये वो क्या चल रहा है? No, I feel the times have changed. People are very very supportive and also communicate. दिल में जब तक रखोगे ना चीजें अंदर ही अंदर, कहीं ना कहीं वो ऐसे बहुत ज्यादा. तो लाइफ में कितना भी अच्छा क्यों ना हो रहा होगा ना, बिकॉज मेरे साथ ऐसी चीजें हुई थी. Such fabulous things happening with me. I was winning awards. I was on television. I didn't feel anything from within. I was like, why everyone else is so happy? Why am I not happy? Imagine. And that was the time. Yes. So this can happen with anyone. So please take and seek a good and great mental health. And बाकी वर्कप्लेस में प्लीज सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी को कभी हटाकर अपनी लाइफ में काम मत करना. कुछ टाइम के लिए कर लोगे, थोड़े टाइम के लिए, probably few months, few years. In the end, you'll be like, oh God, I cannot do this. And जब तक आपको रियलाइज होगा तब तक टाइम बहुत आगे निकल चुका होगा, चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट हो चुकी होंगी. तो प्लीज मेक श्योर that wherever you work, the environment needs to be good. I understand it's very very easy for me to say कि अरे यार environment अच्छा रखा करो, जबकि आपके आसपास इतने सारे नेगेटिव लोग होते हैं. But I'm sure that you'll be able to find out a way to deal with it. You'll be able to, भाई अपने को खुद खुश रखना है, खुद को खुश रखना है और आसपास के लोगों में खुशियां बांटनी है. That's it, nothing else. And all the very best. If you guys also feel stuck, just take the decision. And अगर आप लोगों को लगता है मेरे पास फाइनेंशियल बैकअप था कि अरे भाई घर वाले दे देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, no. To be honest, first ever time मैंने बिना सोचे सारी चीजें करी, because I feel happy doing this. That's it. So please do the things that actually feel
feel happy. Yes. That's what I want to say. Thank you so much, Devangana. This is one of the best ever. I mean, I just love talking to you. I love your energy. I think we are cosmically connected. So keep smiling, keep shining, and keep inspiring. Thank you, thank you, Thank you. thank you. We have only loves and hearts out Yes, there. we only have hearts for each other. Yes. Thank you, Awesome. thank you, thank you. So good. Loved it.